Thank you so much for फोटो में दिख रहे हैं वही है क्या? वही है. So nice. So this was when I used to do like 5 Yes. years back. So ये 5 years पहले का फोटो है. So we'll listen and we'll understand something. पता नहीं इनकी कोई एक बात हमारे को हिट कर जाए और शायद हमारा भी थोड़ा बहुत भला हो जाए. So इनके पास यानी कहाँ से वहाँ ग्राउंड लेवल से बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंज है बैंगलोर में आके सेटल होना. ये बैंगलोर से नहीं है वैसे तो. Please give me some experience about your life. Hi everyone, I'm Abhishek. So I'm a professional bodybuilder. I won Pro Card. It's from the federation called World Fitness Federation. So Pro Card is something we earn it after winning certain competition called Pro Shows. So there are only few Indians who wants Pro Card, maybe like 5-6 guys in all India. Yes. And thank you guys. And I'm the first Indian to win one of the Pro Shows till history. No one ever won it. क्या बात है. To start with the bodybuilding journey, let me talk about my achievements till date. So I won 2 nationals and 2 South India, 3 Mr. Bangalore, and 1 Asia Pacific. And I have last year I competed. Last year I competed in Thailand or represented India for Mr. Universe. I placed top 10. And this year, last year November I competed in Bali, Indonesia for Mr. World. I placed top 5 in that. So these are my achievements right now. And next year I'm planning to compete in Mr. Universe, which is happening in Mexico, and November Germany, Mr. World. So these are my goals. Thank you so much. Okay, so when I was studying in high school, I had a lot of interest in bodybuilding. So the thing was like, I come from a small village where all our parents wants to be like engineer, doctor, or whatever. हर घर की यही कहानी है. So then after I didn't get any chance, but when I was in hostel, so I used to work out during my study hours. So I used to get caught. There are times where I washed bathrooms and toilet as a punishment because I was working out. Yeah. So this is how it all started. Then when I moved to Bangalore, I was working in Emphasis as a tech support. After some time, I got to know like it's not working for me. So I switched to bodybuilding, mainly as a trainer because I wanted to learn something which is related to bodybuilding. Because being a trainer only like, which is all about trial and error, so you can learn more things about bodybuilding. Yes. So in 13 I started bodybuilding. It's been almost 10 years now into the bodybuilding. So these are all my achievements till date, but I'll be competing for so many years. This is what my dream is. So I come from a very small village, which is in place called Sakleshpur in Karnataka. My favorite place. Yeah, and we live in Coorg. I think it's almost your favorite. Almost Bangalore से घूम फिर के सकलेशपुर ही घूम के आ जाते हैं. Yeah, Sakleshpur and Coorg, these are the most. Scotland है हमारे इंडिया का one of the best place है. Yeah. If you want to घूमना है तो वहाँ घूम के आ जाओ. Yeah. So I come from a very small village. So once I moved to Bangalore, so it was very difficult. Like after I quit my Emphasis job, so I was working for like 3,000 rupees in the beginning because it was all for my passion. So then I started bodybuilding and I started learning because that was the time. So I didn't know anyone who is into the bodybuilding who are from my side or like whoever is that because I'm the only guy in this field till date. So no one, because now also it's a different thing when you try to explain people like what you are into. It's really hard. But I love what I'm doing now. So that's one of the reasons probably like I'm achieving all the big things. यानी शुरुआत में पैसे के लिए कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए. काम तो पैशनेट जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मनी तो आ जाएगा ना. सर इसमें कितना सैलरी मिलेगा, अरे पैसा, अरे बुकड़ पहले काम तो शुरू कर. जिस दिन इतना जबरदस्त काम करो, जक मार के सैलरी देनी पड़े, जक मार के पैसा देना पड़े. एंड नाउ इट्स लाइक अभी बोलने की जरूरत नहीं है. अगर मैं बोलूंगा तो लोग मानेंगे नहीं. 6 पैक बनाना है, अभी चला सुनता नहीं है ना, मानता नहीं. ये बोलेंगे तो मान जाएंगे, हाँ सर बनाना है. दैट्स लाइक यानी रियल अभी पूछने की जरूरत नहीं है ना कि अगर ये बोलते हैं बॉडी कैसे बननी, हाँ सर जल्दी से टिप दे दो. हमारे पास अलग स्टोरी है. हम तो ये बता सकते हैं हाउ टू रन ए सर्विस सेंटर. इसके सारे टिप मेरे पास हैं. अभी बॉडी कैसे अच्छा बनाना. I think you also started when it was small and you've grown big now. Yeah, it's all the same story end of the day. वहाँ से जब आए हैं 800 रुपीज हमारा सैलरी नहीं है.
बट हमने कहीं से छोड़ा नहीं ना इसको। आई टेकन द डिसीजन एंड कॉल राइट, अभी राइट है रॉन्ग है प्रूव करके दिखाना दुनिया को, अभी राइट है, अभी कोई बोलता नहीं है ना। एग्जैक्टली। यानी पहले जब मजाक उड़ाते हैं ना, जिस दिन वो बन जाते हैं फिर किसी की औकात नहीं होती मजाक उड़ाने की। ये बन के दिखाओ तो सही पहले दुनिया को। यानी उस वक्त कोई नहीं था, 800 रुपीज सैलरी है, हमने भी 4500 दिया है 2000 के अंदर, बट मुझे पता है कि आई टेकन ए गुड डिसीजन इन दैट टाइम, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई लर्न द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन ओनली। And exactly this. So when you try doing something what you love, so obviously there won't be like much of money or whatever is that. अभी उसको एंजॉय करते हैं ना इसको, लाइक अभी अच्छा भी लगता है, पैसा भी आ रहा है, दैट ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलता है। रिपेयर एंड सर्विस, अभी एक कस्टमर का फोन रेडी भी हो जाए, जो चार्ज भी दे रहा है, साथ में थैंक यू भी दे रहा है, नहीं दिया तो हम ही बोल देते सर लर्न से टू थैंक यू, यानी दे के ही जाएगा, यानी पैसे के साथ, हाँ बिल्कुल दे के जाएगा ना। And obviously they'll be more happy. अभी इनको कोई सर्टिफिकेट गला में लटका के घूमने की जरूरत नहीं है, मैं बॉडी बिल्डर है, हेलो on flex will be यानी नो नीड एनी सर्टिफिकेट, कुछ अभी अवार्ड लेके घूमना है, किसी की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। Yeah, so then I started doing my bodybuilding. So I loved it what I did, and again I had a lot of offers like why you're doing it, because bodybuilding is a sport. It's most expensive and most dangerous sport in the world. So when you do something like that, people are like, why do you do it? Because there's no money in it. So obviously, like, why do you want to do it? Because it's my passion. So one thing is my passion, and I'm proud that I'm representing India. Like not everyone does. We are also proud. Thank you so much for being here. Thank you. मैंने इनको सुबह बोला है कि यहाँ से सिग्नल से 18 लाख लोग घूमते हैं, आप लेके बैठ जाओ, आपको एक भी पर्सन नहीं मिलेगा जो सिक्स पैक और बॉडी लेके घूम रहा है। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, दैट्स कॉल्ड वी कॉल मॉडल एक्टर। जिस दिन रैंप वॉक करते हैं वो खोलने का लाखों रुपए चार्ज करते हैं, सुपर मॉडल। So proud and thank you so much. Thank you so much. हमारा invitation और thank you so much for inviting, man. It's really nice meeting all you guys. हमारे को भी कोई few टिप मिलेंगे, पता नहीं कोई न कोई एक आध हिट हो जाए और हमारा भी हम भी इम्प्लीमेंट कर लें। जब तक कोई बोलता नहीं है ना चार लोगों के सामने, जिस दिन कोई इंसल्ट कर देना उस दिन वो स्ट्रांगली लेता है, कैसे हाउ यू कैन फील लाइक दैट। तो अभी पता नहीं जाने अनजाने में बोले, बट कोई पता नहीं कोई एक वर्ड भी मैं ले लूँ और इम्प्लीमेंट कर दूँ कि भी हाँ हाउ आई कैन इम्प्रूव दैट हेल्थ। पता नहीं क्या क्या टेंशन लेके बॉडी इंप्रूव नहीं हो रहा ना, एक दिन पैसा तो रहेगा बट एंजॉय करने के लिए आपके पास हेल्थ नहीं रहेगा। और हिंदी में भी बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी गया, उसके बाद धन माया, तीसरा उसके बाद है, पहला हेल्थ ही है। कोरोना में पता नहीं कोरोना में कितने की लोग टिकट कटा दिए। तो जिस दिन हेल्थ अच्छा है उस दिन हम इस चीज़ का एंजॉय भी कर सकते हैं, उस पैसे का भी एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो साला गाड़ी हमारे पास लग्जरी रहेगा, चलाने के लिए अलग ड्राइवर बुलाना पड़ेगा, हमारे से चलेगा भी नहीं। Exactly. So if anyone has any doubts about fitness or anything, एक हमारे पास हेल्थ एंड फिटनेस वाला है, इज अ वेरी इज अ वेरी जिमर। यस यस यस, ये इसका भी यस वेरी नाइस। and now अगर ऐसा इनको अगर यूनिवर्सल कोई फ्यू टिप देना चाहें जो इम्प्लीमेंट करना चाहें और वीडियो के माध्यम से भी कि भी हाँ लाइक हाउ यू कैन अवेयर अबाउट दैट। वैसे ये चार्ज करते हैं, अभी आज हम बोल देंगे तो फ्री हो जाएगा हमारे लिए। definitely हाउ वी कैन, अभी मेरे को पता है ये कम तो नहीं होगा। so when it comes to being fit, there are two things. One is workout. So workout is something where you can just get it anywhere. You just walk, just run, whatever, climb stairs, whatever. Just only thing is you have to keep moving around. सबसे बड़ा मुश्किल तो है भाई उठना ही चैलेंज है सुबह। अभी इन्होंने टाइम के कितने पंचुअल है, लाइक इट्स लाइक 5 o'clock, इट मींस आपका घड़ी ऊपर नीचे हो सकता है एंड बी देयर इन 5 o'clock एग्जैक्ट, यानी दैट्स आई लव दैट। थैंक यू सो मच। बाकी हमने बहुत सारे गेस्ट देखे हैं, 5 बजे पता नहीं कौन सा 5 भैया मैं पीएम बोला था यानी 2 hours waiting finally. Again, bodybuilding is something where you need a lot of discipline and everything. यानी वो टाइम का पंचुअल तो चाहिए, नहीं तो फिर कैसे होगा। Sorry, I didn't get. Bodybuilding? Not much actually. You earn if you're into bodybuilding, you spend a double of it because everything is costly. You need to eat like a lot of protein. I mean, chicken, whatever is that. And supplements take a lot of money. And again, अगर ये जिम में रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद इनसे ही आके कोई पूछेगा ऐसा बॉडी बनाने में क्या करने का। मेरे को पैसा दो। I'm 33 years old now. लगते नहीं है ना। So
मैं चाहता हूँ कि कोई यूनिवर्सल फ्यू टिप Yeah. जो इनके लिए काम आ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रांगली। और मेरे को लग रहा है शायद एक भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो विल चेंज समथिंग इन आवर लाइफ। बाकी Yeah. रिपेयर एंड सर्विस में आप बेस्ट हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा Yeah. कीजिए, अच्छा करना भी चाहिए। गिव वन ऑफ द बेस्ट सर्विस। जिस दिन हम ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, ऊपर वाला भी मदद करता है। यानी हमारा प्राइस अच्छा है, हमारी नीयत अच्छी है, हम मेहनत अच्छी करते हैं, यानी मेहनत तो है, इसमें तो कोई कमी नहीं है। बाकी ऐसे थोड़ी बनता है। मैं उधर जनरली जिम में जाके दो बार नहीं किया वो, और उससे पहले अरे भाई नहीं बना है, अभी टाइम लगेगा। और जिनको बनाना उनको कांच ही नहीं देखना है। मैंने जनरली देखा उधर जाके न्यूज़पेपर पड़ेगा, उधर मेरे को लग रहा है क्यों लगाया न्यूज़पेपर इधर। जिम के अंदर न्यूज़पेपर चाहिए, वो कांच चाहिए। जिस दिन बॉडी बनेगा दिख रहा है ना, बॉडी अभी बोलने की कहां जरूरत है। और मैं जनरली उधर देखता ईच एंड कितने वो फोटो खिंचाने जाते हैं या जिम में जाते हैं। ये तो मोबाइल अलाउ नहीं करना जिम के अंदर। यानी उधर स्टोरी बनाना है, फोटो खींचना है, स्टेटस डालना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है मैं जिम में जा। अब भाई जिम में जाने बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया को फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी 2 स्टेप नहीं किया है। और उससे पहले अरे भाई अभी शुरू किया है, फर्स्ट डे है, अभी नहीं हुआ पेट अंदर करके भाई। लाइक I don't know how that crazy runs. And a lot of them complain when they come to gym, like they come for like 2-3 weeks and they're like, oh, I'm not, losing weight or like getting. When I gym joined that 78 kg, after 1 year I am 85 kg. पता नहीं जिम, और जिम भी एक्सरसाइज कर रहा, एक्सरसाइज भी कर रहा था। एक्चुअली वो जो एग्जांपल दिया वो मेरे पे ही है। Maybe. I am enjoying all the तामझाम। उसके पास में फोटो इतना अच्छा था और मैं ऐसा प्लेट पकड़ के फोटो खिंचा रहा, क्या था कि पेट दिखे नहीं। So मैं चाहता हूँ लास्ट एंड फाइनल कम few tip will understand a reason last and final few tip how we can make them such a। मैं नहीं बोलता हूँ कोई इतना हाई फाई का बॉडी चाहिए, बट एटलीस्ट हेल्थी वाला, लाइक साला वो टैबलेट ना लेना पड़े। हाँ अभी इतना तो कहाँ बनेगा, बन तो जाएगा मेहनत करेंगे तो। यस Okay. There are two things when it comes to fitness or being healthy. So one is physical and one is what you eat. So these two works always together. I'm a pure vegetarian. That's okay. Doesn't matter. So all you need to like maintain like good discipline in the eating and good discipline in workout, whatever physical activity. Both takes 100%. There's nothing like few people say it's 70% and 30%. No, because I say like 100. Both should be 100. So only when you have discipline on both sides, you can achieve that goals in fitness or being fit or whatever. साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है, नंबर 1 पॉइंट। खाली एक्सरसाइज एक्सरसाइज मतलब करने से नहीं होता है और खाली खाने से भी कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज मतलब कुछ भी होगा, जस्ट मूव अराउंड, दैट्स इट। So just don't stay at one place, keep moving around, anything.